Yeah, good morning, everyone. Okay, so we were doing the activity diagrams, right? Last time. Okay, so tomorrow you have a class, means lab B1, and Thursday B2 have a lab. So we will implement the activity diagrams, and next week, that is that 20 on 22nd basically, B1 will have their lab exam, and on 24th B2 will have their lab exam. Okay, so be prepared for that. Details I will share later. कैसे होगा? Okay, so we were seeing the activity diagram. Okay, so this was our second behavioral diagram. What was the first behavioral diagram? What was the first behavioral diagram? पहला डायग्राम क्या पढ़ाया था बिहेवियरल में? So this class was a structural diagram, right? Class, देखो इधर, class diagram, object diagram, component diagram, deployment diagram, package diagram. These are your structural diagrams. Okay. The first use case diagram that we have seen in the beginning was behavioral diagrams. Oh, sorry, use case diagrams. And now we are seeing the activity diagram. Okay, so this is how the activity diagram looked like. This was your initial state, this was your final state. Means the activity will start from this node or this state and it will end at this state. These are known as activities. Obviously we are talking about activity diagram, so all these rounded rectangular boxes are known as activities. Means this is first activity, this is second activity, and so on and so forth. Okay, and this is known as the decision node. Means when you will reach here from activity 1, you have to take a decision that either to go this side or to go this side, just like if else condition. Okay, if you go this side, then you will perform these two actions and then you will come here. If you go this side, then you will perform this action to be and you will come here. But doesn't matter, either you come from this side or you come from this side. Finally this is known as a merge node. Means you have to merge or meet at this point and फिर यहाँ से साथ में जाना है, चाहे इधर से आए हो चाहे इधर से आओ. You will merge at this point and then you will go towards the action 4. Okay, for example, this was the activity diagram for the process. How you will identify what this activity diagram is talking about? Generally the first activity represents कि क्या बात करने वाले हम लोग. Okay, for example, this is showing that you are going to manage the employee. How you are going to manage the employee? First here you will make a decision that either the employee is existing or the employee is new. If existing, you will go this side. If new, you will go this side. So these are alternate paths. Either you are going this side or you are going this side. Fine. But if you want to go parallelly, if you want that no, I should not go either this side or this side, I should execute both the sides or both the activities simultaneously, then we will use fork. We use fork for this purpose. This dark black rectangular is line is bar, or this bar is known as fork. Okay, this bar is known as fork. So here you started from this initial node, you received the order, and after receiving the order you have performed some actions inside this fork, and these actions are happening simultaneously. Okay, means after receiving the order
one person will start loading or filling the order in the bus, and other person or other party or other department in your company will start making the invoice and sending it. So both these things are happening simultaneously at the same point. Both these things are happening simultaneously at the same point. Right? So पढ़ा दिया है last class में, just quick revision I am giving you. In activity diagram, the flow, why this is a behavioral diagram, because something is moving inside the system, something is interacting inside the system. Just like in use case diagram, you had an actor, right? The actor was interacting with the use cases. Similarly, in activity diagram, whatever activity you perform, it will have some impact on an object. किसी object के ऊपर ही impact होगा सारी activity perform करने का. So that is how you can show the status of object after performing each activity. हर activity करने के बाद object के status में क्या change आया, किसी भी object की बात कर सकते हैं, that you can perform. Either your object can be a user, your object can be a bill, your object can be a anything, living, non-living thing, object can be anything. After performing this activity, suppose receive order, I want to check what is the change status of that order, so I can create an object node. Object node is represented in rectangular box in your activity diagram. Okay, this is how object node is represented, rectangular box. Fine. For example, this is object node, this is object node, this is object node. So we started from the initial node, we received the order. Then after receiving the order, suppose my object is, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, my object is invoice or the bill. Bill का status I want to know. So after I receive the order, after only that point, the invoice will be created. So in the object node, you will write the object node name as invoice, and the square brackets you will write the status, the current status. For example, the object is invoice and it is created after receiving the order or after this activity is performed. Now the second activity is performed, send invoice, means the invoice is sent. So now what is the status of the invoice object? It is pending from the user side. User bill भरे, उसके लिए भेज दिया गया ऑब्जेक्ट, अब वेट कर रहा है इनवॉइस अपने स्टेटस चेंज होने का. आफ्टर the payment is received or the user made the payment, now the status of the invoice will be changed to paid. Doubt किसी को? Everyone. See, I have told you one thing earlier also. This is the last time. Today, in last time, I'm telling you this. 20% your internal marks depends on 20% का मतलब हो गया out of 100 20 marks directly. I will give based on your class performance only. In the chat box, if I am seeing 6 to 7 names continuously daily, बस इन्हीं 6 से 7 लोगों को वो 20 marks मिलेंगे. बाकी सब अपने internal 80 में से काउंट करना सीधे. उससे ज्यादा एक नंबर नहीं दूंगा किसी को. और 80 में से भी obviously you will not score good in tests, you will not score good in assignments. किसी के भी इंटरनल 50 से ज्यादा नहीं आएंगे. मैं इंटरनल में देता भी नहीं हूँ ज्यादा. ऊपर से if you are not responding in the chat boxes also, it's going to hamper your marks only, let me tell you. And my paper will be such कि इन सब मिड सब में सबके ही खराब आना है. That I can assure you. Okay. So internal is only in your hands, and if you are not responding in the classes, it's going to severely impact your marks. And I don't want कि थर्ड ईयर में प्लेसमेंट के टाइम किसी के मार्क्स खराब रहे. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर नेम मुझे याद हो जाना चाहिए सबको, और सिर्फ डेली 6 to 7 स्टूडेंट्स का मुझे नाम दिख रहा है, तो बाकी अब तुम लोग देख लो, अब समझदार हो. आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन. So this we have seen in the last class. Okay. Now the next thing was pins. Okay. So why we use pins? Pins are used for the sending data or receiving data. Okay. Suppose this is my action 1, this is my action 2, and I want to send some data from this action 1, and that data will be received by the action 2. Then we use pins. Okay. For example, my first action is filling order and second action is shipping order. Okay. Order को ट्रक में लोड कर रहा हूँ और फिर उस ट्रक को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ. Okay, so suppose after loading the order in the truck, I sent, this is the output pin, I sent one data. For example, the data can be address, this address पे ship करना है, this can be my data. So we will use this output pin, and the same data which you have sent
will be used as an input pin by another action. Okay, the same data, if you have sent address from here, it will be received as address only, it will not be changed in the middle. Okay, it can be anything. Suppose this is your first function, that is this activity is nothing but a function, suppose mathematical function. Okay, that is suppose numbers, this is a numbers function, and this is your second activity in a rectangular box, this is adding two numbers, adding two numbers. So what this activity needs, what data this activity needs to perform, क्या चाहिए उसको, to perform this adding activity, what data you need numbers to add, right? So it should receive as an input numbers, suppose two numbers की बात कर रहे हैं, so it should receive at least two numbers, n1 and n2, right? So these two numbers will be sent as a output by this numbers activity, ये भी n1 n2 भेजेगा, and this n1 n2 will be received as a input by this adding number. So this is the reason why we use pins. If you want to transfer some data, you use pins. But suppose you transferred n1 n2 from here, but this adding activity doesn't wants to use this whole n1 n2, पूरा का पूरा n1 n2 इसको नहीं चाहिए, it needs some modification. This adding activity needs कि मुझे n1 में से 10 माइनस करके दो और n2 में 10 प्लस करके दो. I need the data like this. So now what you have sent n1 n2 has been transformed to this. So this representation will be shown with the help of transformation, that I sent n1 comma n2 data to you, but you didn't receive it as it is. You changed or you transformed this data into n1 minus 10 and n2 plus 10. So this transformation will be represented by this note, and ये कुछ नहीं है, एक note है. In the note we have used the stereotype as transformation. और क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, n1 n2 ट्रांसफॉर्म हो रहा है n1 minus 10 n2 plus 10 में. So this is what you will write below stereotype transformation. ये कुछ भी लिख सकते हो, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है ना. यू कैन राइट इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, किसी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज अ नोट. ओके, यहाँ डायग्राम्स भी चिपका सकते हैं लागे, कोई दिक्कत नहीं. बट इट शुड बी विजिबल टू द यूजर that okay, this pin, this output pin sends some data, but it is transformed or it is changed before this activity received it as an input, है ना, रास्ते में change हो गया, transform हो गया data. So this was pins. Then we have seen the sub activity diagram. So with this rig representation, जो भाला बना हुआ है तीर तलवार, ये representation है sub activity system का. Sub activity system is nothing but a kind of nested activity. Okay, for example, if this is your whole activity diagram and this is the particular activity of your activity diagram, अब इस activity के अंदर भी खुद का एक activity diagram होगा, इसके अंदर भी खुद का एक activity diagram होगा, उसके अंदर भी खुद का activity diagram हो सकता है. This is kind of a recursion, that is not recursion basically, but it is kind of a nested loop that is happening. Okay, for example, this was your activity diagram, that you started from here, then you received membership application, then you have made a decision that either the fee is included in the membership application or the fee is not included. If the fee is included, you perform some other activity, that is process membership, मतलब उसकी membership को process करेंगे. After that we will send the welcome letter and it is closed. If the fee is not received, then we will send the invoice की fees भरो, and after that the application will be pending or it will be closed. दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी. Right now this symbol is showing that this process membership activity, जो भी ये ऐसे rectangular rounded box में लिखा है, that is your activity only. So this symbol is showing that this activity or this process is now having its own process diagram like this. Okay, इसमें represent करेंगे. For example, this process membership. Okay, यही process था जिसके अंदर ये symbol बना हुआ था आपका. So this process will have its own activity diagram. वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. वट एवर एक्टिविटी डायग्राम यू वांट टू ड्रॉ इट हियर, उस प्रोसेस का नाम यहाँ लिखेंगे, और उस प्रोसेस में इनपुट क्या आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे, उस प्रोसेस से आउटपुट क्या जा रहा है वो यहाँ लिखेंगे. दीज आर नॉट एक्टिविटीज. ये जो इनपुट आउटपुट पैरामीटर लिखा है ये एक्टिविटी नहीं है. एक्टिविटी तो ये था, प्रोसेस मेंबरशिप. इसमें कुछ इनपुट आ रहा है,
और इससे कुछ आउटपुट जा रहा है, बट दैट नेसेसरीली नीड नॉट टू बी अ डेटा। जरूरी नहीं है कि वो एक डेटा ही हो। इफ यू आर वेरी श्योर दैट वॉट एवर इनपुट दिस प्रोसेस मेंबरशिप इज रिसीविंग इज अ डेटा, तो क्या यूज करते हैं? If you were sure that this process membership is receiving some data and it is sending some data, then what you would have used? You would have used pins, right? Right, so Chandra. But we are not sure, okay, that this process membership will always receive data. It can receive anything. So if it is receiving anything, that anything will be represented with the help of input parameter, and whatever it is outputting, that will be shown with the help of output parameter. They need not be pins basically. Okay, so this is the structure for a sub-activity diagram. For example, this process membership, we are making the sub-activity diagram for the process membership. So what input parameter it received? If you see in this diagram, what input it is receiving? क्या आ रहा है इस प्रोसेस मेंबरशिप के पास? इनपुट क्या आ रहा है? फी, या जनरल सेंस में फी कह सकते हो, पर किस चीज के बारे में फी? इट शुड बी क्लियर, ओके, नाम क्लियर होना चाहिए। या मेंबरशिप एप्लीकेशन आ रही है बेसिकली इसके पास, पेड मेंबरशिप एप्लीकेशन आ रही है, यू कैन से। Okay, if you want to generalize it, you can say paid membership application आ रही है। So the input that is receiving is membership application. वो आने के बाद now it can have its own activity diagram. इसके अंदर खुद का activity diagram हो सकता है, right? For example, after receiving the membership application, it is again performing a decision node. यहाँ पे आके फिर से check हो रहा है that whether this is premium membership or not. मतलब paid होने के बाद भी there are two options, right? That whether it is in premium membership or it is normal. If it is in premium membership, you are adding it to the VIP club. If it is the normal membership, you are just ranking or adding it to some file, and then again they are merging on this merge node. और उसके बाद से फाइनली एक मेंबरशिप आईडी असाइन हो जाएगी, और वो जो मेंबरशिप आईडी असाइन होगी, मतलब एक आईडी मिल जाएगी बेसिकली, यूजर आईडी पासवर्ड। वो यूजर आईडी पासवर्ड along with will be sent to this welcome letter, और इसमें वो अटैच हो जाएगा। So this is how sub activity diagram works. Generally, see, this is a kind of tricky situation whether you want to use sub-activity diagrams or not, because this will complicate your diagram. Earlier diagram was this only, इससे भी पता चल जा रहा है हो क्या रहा था, but if you want to provide some more details to your activity, that I want to show that how this process membership is happening, क्योंकि ये पूरा डायग्राम जो है ये किसी एक प्रोसेस के लिए बना हुआ है। दिस इज मेड फॉर द प्रोसेस मेंबरशिप एप्लीकेशन। मेंबरशिप एप्लीकेशन एक एक्टिविटी है जिसके लिए फ्लोचार्ट बना हुआ है कि दैट हाउ दैट एक्टिविटी इज गेटिंग परफॉर्म्ड। उसके अंदर भी एक एक्टिविटी है प्रोसेस मेंबरशिप, जिसके लिए खुद का एक एक्टिविटी डायग्राम है। सो इट इज कॉम्प्लिकेटिंग योर सिस्टम, सो इट डिपेंड्स वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट। दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर ऑप्शनल, ओके, व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग इज ऑप्शनल इन योर डायग्राम, डिपेंड्स यू नीड देम और नॉट। क्वेश्चन कभी एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोलेगा मुझे सब एक्टिविटी डायग्राम भी बना के दो। इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू शो। फाइनल आउटकम इज योर डायग्राम शुड बी informative and clean, complicated नहीं होना चाहिए। If while making the sub activity diagram you think that diagram is getting complicated, you need not make it. But if it is providing you some extra information, because अगर हर प्रोसेस का सब एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हो तो बेसिकली ये पूरा एक्टिविटी डायग्राम जो ऊपर से है, यू आर परफॉर्मिंग अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, बहुत सी ज्यादा चीजें छुपा रहे हो, and after that you are showing with the help of a activity diagram, right? So it depends, it's both sided, it's positive also, negative also, depends what you want to do and what you want to show. So this also we have, so till this point we have read in the last class. अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। Clear? Okay. So now the next thing is exceptions. Okay, so what is exception? अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, that you started from this initial node, you have performed this action 1 and then you perform this action 2, और सब कुछ अच्छा रहा, हैप्पी एंडिंग हो गई, तो finally the activity diagram will close. But this is not how in real life situation will be, right? If suppose you perform this action 1 और कुछ error आ गई, there is some exception, कुछ गलती हो गई यहाँ पे, so you have to show this exception also,
Okay, like exception handling is done in programming, you have to show exceptions also. कैसे शो करते हैं? This zigzag line, ये जो zigzag line है, this is known as the exception line. Okay, you have to show this exception and then perform this activity. For example, suppose you started from this initial node. Okay, you received the order, you filled the order, you shipped the order, final state is received. सब बहुत बढ़िया है. But suppose while receiving the order, you received the order, but the user cancelled the order. तुमने ऑर्डर रिसीव तो कर लिया, बट ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले ही यूजर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया. So there is an exception at this stage that after receiving the order, there is a chance that user can cancel the order also. So we will make this exception line. Okay, this is the exception handler. This interface is of visual paradigm, but this is same things are available for star UML also, so no issues with that. This is the exception handler. This is exact line. This shows that after you perform the receive order activity, there may be some exception, and if there is some exception, what kind of exception? Item is discontinued, or suppose the user placed the order but you don't have that in your stock से खत्म हो चुका है वो order, so obviously you cannot move forward. तुम पैकिंग करके ऑर्डर शिप नहीं कर दोगे, इसी स्टेज पे you got it that order is out of stock. So this is the exception that item is discontinued. So what activity you will perform if the item is discontinued? You will cancel the order. And after canceling the order, after this activity is performed, you need not perform the above two activities. You will directly reach the final state. Okay. So there can be a lot of exceptions. Okay, यहाँ पे एक exception ये show कर सकते हैं that suppose जैसे होता है ना कभी फ्लिपकार्ट में that a particular user can place only 3 pieces of this particular object, 3 pieces per object order. So suppose the user placed 4 pieces of that order. So again you will perform an exception that send a message. This is the exception that you यहाँ पे ये लिखना है कि किस वजह से दिक्कत आई है. What is the issue? Issue was that user placed 4 orders for a particular item. So if he placed 4 orders, what you will say? You will cancel the order directly, or you will send him a message or send him a mail that please edit your order again. Okay, so this box is showing what activity you perform after the exception has been encountered. और जब ये अगर यहाँ आ गया, basically DFA kind of thing it is. Okay, अगर A आया तो you will move this side, B आया so you will move this side, और ये एक dead state है, इसके आगे नहीं जाना है. Fine. So what I mean to say, you will not perform these two activities directly. You will reach the final state of the activity diagram. Clear? किसी को doubt? Okay, good. So now we will see signals. Okay. So what are signals? अभी तक हम लोग क्या करेंगे? If you are writing something in this rounded rectangular box, this means the activity that you are performing. But suppose you need some signal that only when I will receive this signal, I will perform this activity. Or after performing this activity, I want to send some signals. Signal can be anything. For example, suppose आप घर के पास जाके अपना गेट ओपन करते हो. गेट ओपन करना एक एक्टिविटी है. Gate open करना एक एक्टिविटी है that will be represented in a rounded box. But you only open the gate when someone presses the क्या बोलते हैं सर? Bell, right? Yeah, doorbell. You will only open the gate when someone presses the doorbell. So you will receive a signal, your bell signal, that only when I will receive the bell signal, I will perform this activity. So that is the only use of signals. Okay, for example, take this, that you will wake up in the morning only when you hit the alarm. खुद से नहीं उठना है. You will only wake up only you have received a signal of alarm. Okay, so this is the representation for a input signal. Okay, ये जो box बना है ऐसा, this is a representation for a input signal. और ये signal का नाम है. जब ये input signal मिलेगा, only then you will perform this activity of getting waked. This is the for a output signal.
ये आउटपुट सिग्नल है, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन। ओके, एक पूरा एग्जांपल लेंगे तब इट विल बी क्लियर। एक सिंबल और होता है, दिस इज वन अदर काइंड ऑफ सिंबल, दिस इज अ टाइम सिग्नल। ओके, सपोज इन योर एक्टिविटी डायग्राम यू वांट टू शो, okay, this activity will be performed, but not always, this will be performed within this time range। so this is the advanced level activity diagram। इसको बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम में, बट पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक सिग्नल होता है। ओके, दिस इज अ टाइम सिग्नल। ऐसा होता है ना, टाइम सैंड नीचे गिरता रहता था, that same representation it is here। you want to calculate time, okay, this activity will not be performed always, this will be performed for 10 hours only, so you make a time signal in front of that, for how much time this activity will be performed, from when to when this activity will be performed, any kind of thing related to time you can show with the help of a time signal। Let's take a whole example, एक पूरा example लेते हैं। Suppose you have placed an order for a pizza। Okay, you have started from this initial node, they received one output signal। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट सिग्नल के लिए जरूरी नहीं है कि एक्टिविटी कोई हो ही रही हो अगल बगल। बहुत सारे इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हो सकते हैं, फिर कोई एक्टिविटी हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यू कैन सी you have this output signal here, then you have this input signal here, then you have a activity। तो इस आउटपुट, फर्स्ट आपका आउटपुट सिग्नल है, इसके ऊपर या इसके नीचे कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। इट कैन बी स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ऑल्सो। Fine, so first you started from the initial node, this is where from where your activity diagram will start, and first you received or you sent the output signal। रिसीव नहीं होगा, रिसीव तो इनपुट सिग्नल होगा। यू सेंट आउटपुट सिग्नल, क्या आउटपुट सिग्नल सेंड किया आपने? यू कॉल्ड द पिज्जा प्लेस। अभी एक एक्टिविटी भी हो सकती थी, दिस कुड हैव बीन एक्टिविटी आल्सो, but just to show the example that how output signal works, we have taken this example। okay, otherwise you can, pizza place तो एक activity भी हो सकती है, right? so it depends what you want to show। for now suppose this call pizza place is not an activity, this is a signal। I am sending a signal to Domino's that please place my pizza order। so this is the representation of an output signal। so firstly I outputted a signal, फिर Domino's ने order receive किया होगा, जो भी perform किया होगा, finally the delivery guy came and he send me an input signal by pressing the doorbell। अब ये input signal representation है, that the delivery guy came and he sent me an input signal by pressing the doorbell। after I received this input signal, now I will perform one activity, that is I will answer the door, then I will pay, then I will eat, sleep, do whatever you want, and finally the activity diagram will close। so this is how you can add, subtract signals। these, see, whatever I am telling you now, they are your tools to make activity diagram। सब कुछ, सब हर एक्टिविटी डायग्राम में नहीं बनाना है, डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू शो, हाउ यू वांट टू शो, everything will be depending on your creativity only। okay, because see, अगर this, if this would have been a theory subject, अगर एंड सम में थ्योरी पेपर दे रहे हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन में मेंशन होता, डायग्राम्स होती है, सारी चीजें होती, बट आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गिव अ थ्योरी एग्जाम। एग्जाम ब्लैक बोर्ड पे ही होना है। so right now your most important concern is to understand all these things, और उसका एप्लीकेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। ओके, अभी सबसे ज्यादा पहली इंपॉर्टेंस जो आपको देनी है, दैट इज टू अंडरस्टैंड, यू शुड हैव ऑल योर टूल्स इन योर बैग। यूज जो भी करना है वो बात की बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी डायग्राम्स जस्ट लाइक योर क्लास डायग्राम्स, दे विल नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल सा आएगा, जैसे होटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का बनाओ एक एक्टिविटी डायग्राम, सो इट विल बी सिंपल, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इनिशियल नोड। ओके, पेशेंट आएगा, रिसेप्शन पे जाएगा, ऑल दोज एक्टिविटीज यू विल शो, so everyone will show that। okay, if it's not mentioned in the question, but if you want to be more creative, you, देखो अब ये जो पूरा एक्टिविटी डायग्राम है, कॉल, पिज्जा, डोरबेल रिंग्स, ये एक्टिविटी भी हो सकती थी, दिस कुड हैव बीन नॉर्मल एक्टिविटीज आल्सो, राइट? ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी था कि सिग्नल ही इसको शो करना है हमने। सो दीज कुड हैव बीन योर नॉर्मल एक्टिविटीज आल्सो, बट इफ यू वांट टू बी मोर क्रिएटिव, you can use these tools। okay, this is the whole summary of why we are seeing in this step। okay, depending on your creativity, you can use these tools in your questions। so signals is clear to everyone? okay, good। now let's see the another thing, that is a interruptible activity reason।
अब इसका क्या मतलब है? सपोज दिस इज योर एक्टिविटी डायग्राम, this is your activity diagram. You same activity diagram which we have been seeing till now. So suppose activity diagram started from here, you received the order, फिर order pack हुआ, invoice sent हुई, सारा काम हुआ यहाँ, finally the order is closed. Now suppose after receiving the order, when you entered between this fork or you entered this area, something happens, the user cancels the order from his side. तो अगर यूजर ने इस बीच में यहाँ पे कहीं पे भी कैंसिल कर दिया ऑर्डर, it can be anywhere after you receive the order. Obviously Flipkart में order place करने के बाद you can cancel before it is dispatched, or you can cancel after it is dispatched also, right? So दो सारी possibilities हैं आपके पास. So in between this, after receiving the order and before closing your order, in between if the user cancels his order, then there is an error. This activity cannot go in this direction, right? So क्या करें यहाँ? अभी you have read exception. Abhi we have read exception, that this is the exception, that if this activity is performed and there is some exception for this activity, we will move to this state. Yeah, good Kshitij. We will. Okay, so abhi jab when we used exception हमने एक particular activity पे use किया था. Only when you are performing this activity and you encounter an exception, you go to this state. But here I am saying that इस पूरे एरिया में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले या बीच में या कहीं पे भी एक्सेप्शन आ सकता है या इंटरप्ट हो सकता है आपका एक्टिविटी डायग्राम. अब किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से एक्सेप्शन नहीं ले जा सकते कि फिल ऑर्डर करते वक्त ही एक्सेप्शन आया तो वी विल कैंसिल द ऑर्डर, ये करते वक्त ही एक्सेप्शन आया तो वी विल कैंसिल द ऑर्डर. वी डोंट नो, एक्सेप्शन कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन. सो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो दैट दिस रीजन कैन बी इंटरप्टेड, we use a interruptible activity diagram. How it looks something like this. Okay, this is your interruptible activity region. एक जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, दिस इज नोन एज इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन. तो इतने रीजन में डाउट था हमें, इतने रीजन में देयर कुड बी अ चांस दैट एक्टिविटी डायग्राम इंटरप्ट हो सकता था. देयर कुड बी अ पॉसिबल रीजन और ब्रेक डाउन इन दिस रीजन, है ना. इतने रीजन में डाउट था हमें. सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ सिग्नल हियर. ओके, दैट इफ while entering this, अब यहाँ आउटपुट सिग्नल आएगा कि इनपुट सिग्नल आएगा? It depends, basically it depends. Okay, आउटपुट सिग्नल तो तब आएगा ना जब कुछ इनपुट रिसीव करोगे. पहले तो तुम्हें एक इंटरप्शन का इनपुट रिसीव करना होगा, राइट? अब इसमें दो चीजें हैं. फॉर एग्जांपल आइदर यू कैन मेक, यहाँ पे एक अलग से एक्टिविटी बना दो. हियर यू मेक अ डिफरेंट एक्टिविटी दैट ऑर्डर इज कैंसिल्ड. इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म, देन आई विल सेंड द आउटपुट सिग्नल एंड देन आई विल कैंसिल द ऑर्डर. एक तो ये फ्लो कर सकते हो. दूसरा फ्लो ये कर सकते हो कि अगर ये नहीं करना है, then you directly receive a input signal as cancel order. When I will receive this input signal that the order is cancelled in this region, I will use the exception. I will go out of this region and I will cancel the order. Similar, just similar to exception only, but here we are not giving the exception from a state or from an activity or a particular activity, because we don't know in which of these activities the exception can handle, the exception can occur basically. But we know this, that the exception will occur only in this region, in any of these activities. Okay, so we've set a input signal that okay, when you enter this region and while performing any of these four activities, anytime, anywhere, if I receive this cancel request from the user, I receive this input signal from the user that okay, please cancel my order, I will directly jump out of this region and I will perform the cancel order and I will reach the final state. Clear? कोई डाउट किसी को? Saurabh, it depends what you want to show. Okay, अगर तुम, if you need something, some kind of a trigger to do something, for example यहाँ पे ये order cancel करने के लिए
यू नीडेड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर, यूजर को एक रिक्वेस्ट तुमको बोलनी होगी दैट आई हैव कैंसिल्ड माय ऑर्डर, यू प्लीज आल्सो कैंसिल इट फ्रॉम योर साइड। सो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कैंसिल ऑर्डर, you can send the output signal, but first you need to receive some input from the user. So that is why I have used one input signal here. अब इसकी जरूरत मतलब ये नहीं कि आप input signal यूज करना था, instead of that you could have used the activity also here, but that doesn't make much sense कि अपने आप कैसे activity perform, क्योंकि activity इस rectangular इस box का मतलब होता है this is performing, ये हो रहा है, right? But if you try to make a cancel request here और फिर वहां से एक आउटपुट सिग्नल भेजोगे तो इट्स अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट्स, राइट? ये एक्टिविटी कैंसिल कैसे हो जा रही है पहले? Just think in a logical sense. If you want to cancel an order, if the user has cancelled the order and you as a seller want to cancel that product, तो seller को cancel करने का सबसे पहले एक request चाहिए ना user से that please cancel my order. So जब भी request आ रही होती है कहीं से, for example to open your doorbell to receive your order, you need a request that कोई doorbell बजाए. You need something to happen before to do action. ऐसा कुछ है तो input signal होगा. उसके सिवा जो चीजें होंगी वो that will be your output signal. Okay? फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, ओके, सो उसके लिए एक इनपुट सिग्नल आना चाहिए कि एग्जाम अगले 4 घंटे बाद है, तभी यू विल रीड द बुक, सो दैट इज द इनपुट सिग्नल। और ये कोई कंपल्शन नहीं होता है, बट इफ यू आर यूजिंग अ इंटरप्टेबल एक्टिविटी डायग्राम देन इट्स अ कंपल्शन, यू हैव टू यूज सिग्नल्स ओनली, बिकॉज यहाँ पे अगर एक्टिविटी बना देंगे सिग्नल की जगह, पहले तो बना नहीं सकते, बट अगर बना देंगे, सपोज यहाँ पे वी ट्राई टू मेक अ एक्टिविटी और बोले कि नहीं कैंसिल रिक्वेस्ट इज नॉट अ सिग्नल, कैंसिल रिक्वेस्ट इज अ एक्टिविटी, और जब ये होगी तो यहां से मैं एक्सेप्शन परफॉर्म करके बाहर चला जाऊँ, यू कैन थिंक ऑफ दिस वे ऑल्सो, सिग्नल ही क्यों बनाना है, यहाँ पे एक्टिविटी बना दो। बट अगर ये एक्टिविटी बनाओगे तो ये ऊपर से भी कहीं से कनेक्टेड होनी चाहिए, राइट? एक्टिविटी ऐसे हवा में तो झूलेगा नहीं, इसके ऊपर भी कंट्रोल फ्लो आना चाहिए कहीं से। सौरभ, if instead of this input signal cancel request I make a activity, that this cancel request is not a input signal, this cancel request is a activity, और जब ये एक्टिविटी परफॉर्म होंगी मैं यहां से बाहर निकल के ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, पहला ऑप्शन ये है। बट अगर ये करोगे तो ये ऐसे हवा में थोड़ी लटकेगा, इसके ऊपर भी तो कहीं से कंट्रोल फ्लो आना चाहिए, अब वो कहां से दोगे? यू नेवर नो व्हेन दिस कैंसिल रिक्वेस्ट विल बी हैपनिंग, ये कब होगा यू नेवर नो, तो ये नहीं कर सकते। दूसरा यू कैन थिंक कि इसको इनपुट सिग्नल क्यों बनाए, इसको आउटपुट सिग्नल बना देते हैं, आई विल आउटपुट द कैंसिल रिक्वेस्ट और फिर वहां से मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। बट अगर आप ये कैंसिल रिक्वेस्ट आउटपुट कर रहे हो, सो ये देखो आउटपुट सिग्नल होने के लिए भी कुछ इनपुट चाहिए, आइदर द इनपुट शुड बी एक्टिविटी, इसके पहले कोई एक्टिविटी हुई हो जिसकी वजह से आउटपुट हो रहा हो, या इसके पहले कोई इनपुट सिग्नल रिसीव किया हो जिसकी वजह से आउटपुट हो रहा हो। आउटपुट सिग्नल का सिंपल सा मतलब यही है कि कुछ इनपुट उससे पहले रिसीव हुआ होगा। मैं फॉर एग्जांपल यहां देखो, बिफोर दिस आउटपुटिंग सिग्नल द डायग्राम वाज स्टार्टेड, राइट? सो यू नीड समथिंग ताकि आउटपुट हो, खाली हवा में ऐसे आउटपुट बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बनाने में तो कुछ भी बना दो, कोई कंपाइल तो हो नहीं रहा है प्रोग्राम, एरर तो आएगी नहीं, बट दैट इज नॉट अ राइट थिंग ऑब्वियसली, because you will not output, only when the user will say that please cancel my order, then only you will cancel the order। so या तो यहाँ दो चीजें कर सकते हो अगर आउटपुट पहले ही बनाना है, सपोज यू रिसीव्ड, इसको बोल दो रिसीव्ड रिक्वेस्ट, दिस इज माय इनपुट दैट आई रिसीव्ड इनपुट, अब उसके बाद यहाँ पे एक आउटपुट सिग्नल बना दो दैट नाउ कैंसिल द ऑर्डर, और फिर यहाँ से भेज दो। बट जो काम ये आउटपुट सिग्नल कर रहा है वही काम ये एक्टिविटी भी कर ही रही है, सो दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस। गॉट इट सौरभ? मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जहां जो मर्जी है यूज करो, नई मर्जी है मत यूज करो, बस अगर इंटरप्टेबल एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हो तो इसमें यूज करना कंपलसरी है, इसमें यू कांट रिप्लेस दिस सिग्नल विद एक्टिविटी फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज द एक्टिविटी कैन नॉट स्टैंड अलोन, ऐसा कोई स्टैंड अलोन प्रोडक्शन नहीं है, इट इज हैविंग अ फ्लो। तो अगर यहाँ पे एक एक्टिविटी बना दिया तो इसके ऊपर भी एक फ्लो दिखाना पड़ेगा कि आ कहां से रहा है, ऐसे छोड़ नहीं सकते खाली बना के, दैट इज द इशू।
यहां तक डाउट है किसी को? किस डायग्राम के लिए? फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज इट मोर सुटेबल टू मेक इट एन एक्टिविटी और अ सिग्नल? फॉर दिस डायग्राम यू आर सेइंग क्षितिज? इसके लिए तो सिग्नल बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन है। अगर इस इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन का मतलब है इस रीजन में कोई एरर आई, सो आई हैव टू परफॉर्म अ एक्सेप्शन। सो यहाँ एक्टिविटी नहीं बना सकते, यहाँ पे यू हैव टू शो सम सिग्नल ओनली दैट इन दिस रीजन इफ आई रिसीव दिस सिग्नल आई विल डू दिस। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर इस रीजन में मुझे ये सिग्नल मिला तो मैं ये करूंगा, तो इसमें ये सिग्नल मिलना ही होगा। नो नो, एक्टिविटी कैन नॉट एक्ट एज अ सिग्नल। एक्टिविटी अगर सिग्नल की तरह एक्ट कर लेते तो सिग्नल अलग से देने की क्या जरूरत थी? कौन सी एक्टिविटी सिग्नल की तरह एक्ट करेगी? दिक्कत वो है ना, यहाँ पे 4 एक्टिविटीज है, यू हैव 4 एक्टिविटीज है भरत, और यहां से एक एक्सेप्शन बाहर देना है। तो किस एक्टिविटी के थ्रू एक्सेप्शन बाहर दोगे? इफ यू आर थिंकिंग दैट कैंसल आई विल मेक अ एक्टिविटी, तो कैंसिल रिक्वेस्ट इस इंटरप्टेबल रीजन के अंदर एक एक्टिविटी नहीं है। यूजर ने सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की। थिंक थिंक इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। यूजर सिर्फ सेलर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज कैंसिल माई ऑर्डर। सेलर को ही अप्रूव करना है ना, तो सेलर इस रीजन में सेलर काम कर रहा है। यू कैन नॉट मेक दिस कैंसिल रिक्वेस्ट अ एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब ये चीज हो रही है इस जगह, बट दिस कैंसिल रिक्वेस्ट इज नॉट हैपनिंग इन दिस प्लेस। राइट? इस प्लेस का असली काम क्या है? ये जो फॉर के अंदर वाला ये रीजन है, इसका असली काम क्या था? आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर इट हैज टू पैक द ऑर्डर, मेक द बिल एंड देन सेंड। इसका असली काम ये था। दिस वॉज द रियल वर्क इनसाइड दिस फॉर्क। बट ये रियल वर्क इंटरप्ट हो रहा है किसी चीज की वजह से। किस चीज की वजह से इंटरप्ट हो रहा है? व्हेन द यूजर इज सेंडिंग अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज कैंसिल माई ऑर्डर। इंग्लिश में पढ़ो इस चीज को। द रियल वर्क ऑफ दिस region was that you have, after you receive the order, you pack the order, you ship the order, and simultaneously you make a invoice and you receive the payment from the user। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हो रहा है इस चीज के अंदर, इस फॉग के अंदर। दिस होल एक्टिविटी और दिस रीजन कैन बी इंटरप्टेड ओनली इन वन कंडीशन। और भी कंडीशन हो सकती है। सपोज देयर कैन बी वन मोर इनपुट सिग्नल दैट यू आर आउट ऑफ स्टॉक। अब सपोज आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो बताओ वहां पे इनपुट सिग्नल आएगा कि आउटपुट सिग्नल आएगा? इन दिस रीजन after you receive the order you are out of stock। now tell me, if you are out of stock, whether that will be an input signal or that will be output signal? क्या ज्यादा सेंस बन रहा है? आउटपुट, राइट? यू हैव सीन दैट ओके मेरा स्टॉक खत्म हो गया, तो अब वहां पे यू कैन मेक अ आउटपुट सिग्नल दैट ओके आउट ऑफ स्टॉक। मैं आउट ऑफ, अब आपको आउट ऑफ स्टॉक होने के लिए किसी से इनपुट नहीं चाहिए। आपने खुद देखा कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कोई आपको बता नहीं रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे तो ये करना। आपको खुद से पता चला। या स्टैंड अलोन हो सकता है, आउटपुट सिग्नल हो सकता है स्टैंड अलोन, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जनरली चाहिए होता है आउटपुट को भी इनपुट एक्टिविटी एक, लेकिन इट्स ओके, यू कैन शो इट, नो इश्यूज। ओके, बट जनरली वी डोंट गो फॉर आउटपुट। व्हाई? बिकॉज इफ यू थिंक केयरफुली, आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हो, ये आपको इन चारों में से किसी में भी कभी पता नहीं चल जाएगा। वो आपको इसी जगह पता चल जाएगा जब ऑर्डर पैक कर रहे हो। अब बिल बनाते वक्त थोड़ी पता चलेगा कि आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हो। ऑब्वियसली बिल बनाने से पहले चेक किया होगा आपने। पेमेंट रिसीव करने से, पेमेंट रिसीव करते वक्त थोड़ी पता चलेगा आपको कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हो। पेमेंट किसी से रिसीव कर रहे हो तो उससे पहले, सबसे पहले यू व्हेन यू प्लेस अ ऑर्डर, द फर्स्ट थिंग दैट द सेलर डज इट चेक्स वेदर दैट थिंग इज इन स्टॉक और नॉट। सो जब ये ऑर्डर पैक कर रहा है आपका, उसी टाइम वो चेक कर लेगा कि ऑर्डर स्टॉक में है या नहीं। जब ऑर्डर शिप कर रहा है तब थोड़ी उसको पता चलेगा कि ऑर्डर स्टॉक में है कि नहीं। गेटिंग इट? तो टेक्निकली इफ आई से दैट इन तीनों ही स्टेट्स पे इट डजंट मैटर वेदर, और इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का इफेक्ट खाली इस एक्टिविटी पे होगा। इज इट राइट? कैन आई से दैट? कहने से कि आउट ऑफ स्टॉक ऐसी चीज है जो तभी परफॉर्म होगी जब ऑर्डर आप पैक कर रहे हो। बाकी तीनों, बिल बनाते टाइम, पेमेंट लेते टाइम, ऑर्डर शिप करते टाइम, डजंट मैटर, उससे पहले ही हो चुका होगा। सो इफ यू आर वेरी श्योर
दैट आउट ऑफ स्टॉक के जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ इसी स्टेट में हो सकते हैं। तब यहाँ क्या करते, तब इसी स्टेट से खाली एक एक्सेप्शन ऐसे बाहर ले जाएंगे और ऑर्डर को कैंसिल। गेटिंग इट? तब यहाँ पे ऐसे सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं है। सो इसीलिए जितने डायग्राम्स देखोगे मोस्टली मोस्टली इन द इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन, सिर्फ इस रीजन की बात कर रहा हूं, दे प्रिफर अ इनपुट सिग्नल ओनली। क्योंकि गेट दिस सेंस, आउटपुट सिग्नल आप तब भेज रहे हो जब यू आर वेरी श्योर अबाउट अ थिंग। और अगर आप फॉर एग्जांपल आउट ऑफ स्टॉक का आउटपुट सिग्नल आप तभी भेजते जाओ यू आर वेरी श्योर दैट प्रोडक्ट हैज बीन आउट ऑफ स्टॉक। सो आप तभी हो सकते हो जब आप एक एक्टिविटी कर रहे हो और उस वक्त आपको पता चला कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कोई भी एक्टिविटी करते वक्त रैंडमली कुछ एरर नहीं आएगी। गेटिंग इट? सिंपल सा इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन को एक तरीके से इस तरह देखो दैट दिस इज नॉट योर मिस्टेक। एक्टिविटी डायग्राम आपका इंटरप्ट हो रहा है बिकॉज द थर्ड पार्टी और द यूजर इज सेंडिंग समथिंग। यूजर ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। ओके, यूजर ने ऑर्डर चेंज कर दिया, यूजर डिलीवरी डेट चेंज कर रहा है, यूजर इज डूइंग समथिंग जिसकी वजह से आपका डायग्राम इंटरप्ट हो रहा है। सो अगर यूजर कुछ कर रहा है तो आपको उसका पहले मैसेज मिलना चाहिए ना, तभी आप चेंज कर सकते हो। थिंक इट दैट वे। क्लियर? Now comes the expansion region. Okay, this is the symbol for expansion region. अब ये जो डॉटेड लाइन ब्लू कलर के अंदर बनी है इन अ राउंडेड बॉक्स, दिस इज अ एक्सपेंशन रीजन। तो एक्सपेंशन रीजन कुछ नहीं होता, दिस इज अ फॉर लूप इन सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव दिस एक्टिविटी दैट यू रिसीव्ड अ बंच ऑफ कार्स। ओके, एक साथ बहुत सी कार्स मिली हमें, कार 1, कार 2, कार 3। एक कार वॉशिंग सेंटर एक, and car washing center you have 4 cars, you received 4 cars for the servicing. Now you want to wash the car, you want to rinse the car, dry the car, vacuum the car और फिर वापस यूजर को देनी है। and you want to perform these 4 activities on all these cars individually। ये चारों के चारों कार्स पे you have to perform these 4 activities। मतलब ये चारों काम you will perform on car 1 also, you have to perform on car 2 also, you have to perform on car 3 also, you have to perform on car 4 also। मीन्स रिपीटिशन हो रहा है एक्टिविटी का फॉर एवरी कार, राइट? सो इफ यू वांट टू शो रिपीटिशन ऑफ अ process for different objects, you use this expansion region। means whatever will means you received car 1, car 2, car 3, car 4 here। now you will send one by one, you will first send car 1, car 1 will go through all this and will be out from here। then you will send car 2, it will again go through all the process, it will be out। then you will send car 3, car 4 and so on and so forth। अगर ये नहीं करते तो क्या करना पड़ता? कार 1 के लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़ता, कार 1 ऐसे जा रही है। कार 2 के लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़ता, कार 3 के लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़ता, कार 4 के लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़ता। आपको 4 एक्टिविटी डायग्राम बनाने पड़ते शोइंग द सेम थिंग again and again। so instead of that what we did, we created this expansion region that things will come one by one inside this activity region और वो पूरा पास होके बाहर चली जाएगी यहाँ से। दिस इज नोन एज अ एक्सपेंशन नोड। जैसे बॉक्स बना हुआ है बार बॉक्स, दिस इज योर एक्सपेंशन नोड। सबसे पहले ऐसे डॉटेड लाइन बनेगी, देन यू विल पुट एक्सपेंशन नोड हियर, वन एक्सपेंशन नोड हियर। एक्सपेंशन नोड का मतलब कुछ नहीं, मतलब यहां से इनपुट आ रहा है और यहां से इनपुट जा रहा है। ओके, so suppose you received a bunch of cars C1, C2, C3, C4। these are dirty cars। okay, so I have shown the flow name as dirty। ये यहाँ पे आएंगी और यहाँ से क्लीन कार्स बाहर जाएंगी। एंड देन दिस एक्सपेंशन इज इटरेटिव, मतलब एक एक करके कार सारी परफॉर्म हो रही है। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्मिंग वन बाय वन। मतलब पहले वॉश कार हो रहा है, देन रेंस कार हो रहा है, देन ड्राई, देन वैक्यूम। ये पैरेलली भी हो सकता था, इसकी जगह इटरेटिव की जगह यहाँ पे ना पैरेलल दे दो, देन यू कैन शो दैट ये सारे पैरेलली काम कर रहे हैं, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जो भी वॉट एवर रिलेशनशिप यू कैन थिंक ऑफ, अगर
if you want to say that first wash car will happen, then this will happen, then this will happen, then this will happen, in a iterative way this will happen, you name it as iterative. इस expansion region का नाम दो iterative. If you want to show that no, जैसे ही car 1 यहाँ पे आएगी, ये सारे पैरेलली काम करेंगे, सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, जो कि ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट? कार वॉश एक एक करके ही होगा, बट इफ यू वांट टू शो, यू कैन राइट हियर पैरेलल. इसी तरह यू कैन राइट हाफ पैरेलल, हाफ इटरेटिव, कुछ भी लिख सकते हो. दिस इज जस्ट अ डायग्राम. Whatever you will write, it will be assumed that all these activities inside this expansion region are happening in that order, sequentially, parallelly, आधा sequentially, आधा parallelly, पहला iterative, बाकी sequential, जैसा भी, whatever you want to write, doesn't matter. Since this was a car service center, so obviously everything is happening in a iterative में, एक के बाद एक. So in a simple word, this expansion region is nothing but a kind of loop. If you have a lot of objects, और हर ऑब्जेक्ट को एक ही प्रोसेस से बार बार गुजरना है, you want to show car 1 passing through this process, car 2 passing through this process, and so on and so forth, then it doesn't make sense to create 4 or 10 different diagrams. You create only one diagram inside the expansion region, right? इसमें डाउट है किसी को? This is kind of a for loop. For loop क्यों यूज करते हैं? अगर एक से लेके 10 तक नंबर को ऐड करना है, so you can write it like this also, है ना? I equal to I plus 1 जो करते हो, वो क्या मतलब है कि नंबर चेंज होता जा रहा है और फिर ऐड होता जा रहा है. You are performing a iterative loop, right? If you want to suppose print 10 numbers, तो ऐसे प्रिंट करो, सी आउट सपोज 1 प्रिंट करो, फिर सी आउट 2 प्रिंट करो, इस तरह करो 10 बार प्रिंट. इसकी जगह लूप चला के क्यों करते हैं? बिकॉज इट मेक्स थिंग्स इजियर, राइट? अननेसेसरी 10 लाइन नहीं लिखनी है, एक ही लाइन लिखना है, सी आउट आई, और फॉर का एक लूप चला देंगे ऊपर. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. वी वांट दैट 10 कार्स शुड पास थ्रू दीस प्रोसेसेस. 10 कारें इसी प्रोसेस से पास होनी चाहिए. So we will not create 10 different diagrams for 10 different cars. We will create only one diagram, put that in the expansion region, और इसका सिंपल सा मतलब हो कि यहां से जितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इस प्रोसेस को पास करते जा रहे हैं. Now the last topic of your activity diagram is the swim lanes architecture. कुछ नहीं है, देखो, simply put, from here you have started. अब इसको ध्यान से सुनो. From here you have started your activity diagram. Okay, ये activity diagram क्या कर रही है? Request class, check eligibility, check availability, enrolling class. This is checking the availability of a student and the class timetable. Okay, so first the class is requested, the eligibility is checked, then a decision is made that whether you are eligible or not. If you are eligible, you move this side. If you are not eligible, you move this side. Okay, so basically क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ओके, ही इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे इस क्लास में इनरोल कर दो. ओके, रिक्वेस्ट क्लास इनरोलमेंट. फिर उसकी एलिजिबिलिटी चेक हो रही है कि अगर वो एलिजिबल है, वो क्लास खाली है, ओके, सो आई विल इनरोल हिम इन दिस क्लास, और उसको उस क्लास का शेड्यूल भेज दूंगा. इफ द क्लास इज नॉट अवेलेबल, आई विल डिनाई हिज इनरोलमेंट, और उसको एक डिनायल मैसेज भेज दूंगा दैट यू आर डिनाइड. सो दिस इज हैपनिंग. ये समझ पा रहे हो ना? ऐसे ही समझना है, उसमें कहीं लिखा थोड़ी है. यू हैव टू रीड दिस डायग्राम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. पढ़ने में किसी को दिक्कत है डायग्राम? है ना? ये student has requested that please enroll me in this class. Student has requested that please enroll me in this class. For that, you have created an activity diagram for checking his eligibility, that whether the class or the student is eligible or compatible with each other or not. उसके लिए पूरा एक्टिविटी डायग्राम बना है. अब यहाँ दिक्कत ये है इन दिस एक्टिविटी. अब देखो, यूज केस डायग्राम होता अगर, तो हमें पता होता कि ये एक्टर है, ये परफॉर्म कर रहा है, ये यूज केस, ये स्टूडेंट है हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर द क्लास इनरोलमेंट. उसके बाद ये रजिस्ट्रार है, और देयर इज सम अदर पर्सन हु इज चेकिंग हिज एलिजिबिलिटी. सो हर एक यूज केस कौन एक्सेस कर रहा है, वी वर क्लियर इन द यूज केस डायग्राम, राइट? बट यहाँ इसको समझ नहीं आ रहा है. इस डायग्राम को पढ़ के ये तो ठीक है, ओवरऑल यू कैन गेट अ सेंस दैट व्हाट इज हैपनिंग, बट यू डोंट नो दैट स्टूडेंट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये चेक कौन कर रहा है, इनरोल कौन कर रहा है क्लास में, मैसेज कौन भेज रहा है. यू आर नॉट श्योर. आर यू श्योर?
Can you tell me while reading this diagram that who is performing what task? We don't know, right? We don't know. This is just showing me some activities that ये सारी activities हो रही है. अब कौन क्या activity perform कर रहा है, we are not sure. We don't have actors. So इस problem को solve करता है swim lanes architecture. This same diagram I will convert into this swim lanes architecture, जिसमें एक कंपार्टमेंट का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट and the other compartment is registrar. Now if you look carefully this diagram, this is showing that the diagram has been started from the users or students end. Student ने activity diagram को start किया है and user is performing this activity that request class. User is requesting the class, student is requesting the class. उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम का फ्लो चेंज हो गया और आप आ गए रजिस्ट्रार कंपार्टमेंट में. मतलब ये सारी एक्टिविटीज, इतनी एक्टिविटीज आर परफॉर्मिंग बाय द रजिस्ट्रार. Okay, after the student requested the class, the registrar, now it is the duty of registrar to perform. Same diagram है, this is the same diagram, को change नहीं किया है, same diagram है. But now we are showing that what are the actors in your diagram basically जो access कर रहे हैं activity diagrams. So it started from the student requested the class, then you reach the registrar. अभी registrar का काम है, registrar is checking the eligibility of the student. If he is eligible, अगेन हियर इट इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ और लिख सकते हो. उसकी एबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसको क्लास में इनरोल कर रहे हैं. अगर एलिजिबल नहीं है वो, तो उसका इनरोलमेंट डिनाई कर रहे हैं और उसको एक डिनाइल मैसेज भेज रहे हैं. अब अगर डिनाइल मैसेज भेज रहे हो तो रिसीव कौन करेगा? स्टूडेंट रिसीव करेगा, स्टूडेंट करेगा. सो इसलिए सेंड डिनाइल के बाद फ्लो इधर आ गया. सो बेसिकली फ्लो ऐसे ऐसे चलता रहेगा और एक स्विम लेन से दूसरे स्विम लेन में आपका फ्लो ऐसे क्रॉस कर सकता है, कोई सब कुछ क्रॉस कर सकता है. इवन यू कैन मेक अ एक्टिविटी ऑन द एज ऑफ दिस. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट भी परफॉर्म कर रहा है थोड़ी थोड़ी, रजिस्ट्रार भी परफॉर्म कर रहा है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे बॉर्डर पे बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. गेटिंग इट? सो स्विम लेन आर्किटेक्चर इज नथिंग बट इट सिंपली शोज दैट इन योर एक्टिविटी डायग्राम जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें से कौन सी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल इन दिस होल एक्टिविटी डायग्राम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, सेंड डिनायल, रिसीव डिनायल, ये सारी एक्टिविटीज है. बट इसमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो यूजर, जो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है और जो स्टूडेंट से रिलेटेड है. ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर द क्लास एंड ही इज रिसीविंग द डिनायल मैसेज. अगर डिनाई हो गया, वो इनरोल नहीं हो पाया क्लास में, सो ही इज रिसीविंग अ डिनायल मैसेज. और अगर इनरोल हो गया, इफ ही इज इनरोल्ड इन द क्लास, देन ही इज रिसीविंग अ शेड्यूल. सो ये जो तीन एक्टिविटीज है, दीज आर गेटिंग परफॉर्म बाय द स्टूडेंट. इसके सिवा जितनी एक्टिविटीज है वो रजिस्ट्रार परफॉर्म कर रहा है. व्हाट इज दिस शेड्यूल? शेड्यूल क्या है? व्हाट इज दिस शेड्यूल? इस शेड्यूल एक्टिविटी है क्या? शेड्यूल है तो बताओ पहले एक्टिविटी डायग्राम में. शेड्यूल का स्ट्रक्चर देखो, बताओ शेड्यूल क्या है. शेड्यूल इज ऑब्जेक्ट. गुड सौरभ. शेड्यूल इज नॉट एक्टिविटी, राइट? एक्टिविटीज आर इन योर राउंडेड बॉक्स. शेड्यूल इज अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पढ़ाया था ना कि ऑब्जेक्ट, इनवॉइस वाला एग्जांपल. सो शेड्यूल इज ऑब्जेक्ट. दिस इज शोइंग यू दैट यू कैन मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन स्विम लेन टू अनदर. जैसे ही सेंड शेड्यूल, एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड, यूजर विल रिसीव द शेड्यूल. तो कुछ रिसीव कर रहा है यूजर, राइट? दैट इज नॉट अ डेटा. अगर डेटा होता तो यहाँ पे पिन बनाते, यहाँ पे एक इनपुट पिन बनाते, यहाँ से एक आउटपुट पिन बनाते. इफ शेड्यूल वुड हैव बीन डेटा, बट शेड्यूल एक शेड्यूल है. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये इतना डायग्राम, this much is showing you that after you perform this schedule activity or send schedule, one object schedule is sent across the swim lane. एक swim lane से दूसरे swim lane में जा रहे हो. So simply put, swim lanes basically represent you how many actors are there, how many stakeholders are there in your activity diagram, और कौन सा stakeholder क्या perform कर रहा है simply. और कोई भी फ्लो चार्ट कहीं से कहीं भी जा सकता है, कोई भी एक्टिविटी कहीं से कहीं जा सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं जा सकता है. दिस इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू मेक आवर जॉब इजियर. क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा. यहाँ पे चीजें थोड़ी सी क्लियर है पहले से. एनी डाउट्स इन दिस? तो ये तो बात हुई, अगर कोई डाउट नहीं है इसमें, एक डाउट तो होना चाहिए सबको. अगर दो की जगह तीन होगा तो क्या करोगे?
3 बनाना, right? But suppose this is student, this is registrar, and you have another stakeholder like college. Now student also needs to interact with college and registrar also needs to interact with college. तो college को थर्ड लेन में तो नहीं बनाएंगे. सिंपली कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट को ये परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटी या कॉलेज को ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इस स्टेक होल्डर की भी जरूरत है. इट इज ओवरलैपिंग, कॉलेज ओवरलैप कर रहा है. सो इसके लिए यू कैन गो फॉर अ मैट्रिक्स काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल सी दिस डायग्राम, सी दिस डायग्राम. अभी डायग्राम बनाने नहीं तुम लोगों को, बट पता होना चाहिए कि स्विमलैन आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, बस बेसिकली आइडिया होना चाहिए. So in this diagram you can see that you have one, this is the last slide for today, okay, just 5 more minutes. You have one administration, you have one faculty, and both the administration and the faculty stakeholders are interacting with the main campus of a college and a satellite or a child campus of the college. तो यहाँ पे 4 स्टेक होल्डर्स हैं. तो इसको 4 स्विम लेन्स भी बना सकते थे अगर सब इंडिविजुअली काम कर रहे होते. But administration needs the help of main campus also, administration needs the help of satellite campus also, faculty needs the help of main campus also, faculty needs the help of satellite campus also. So it's kind of overlapping. Those stakeholders मिलके एक काम कर रहे हैं. So that is why you have created a matrix kind of a structure here. Okay, so just let's read this once what is happening. So you have started your activity diagram from the main campus, and who have started your activity diagram? Administration has started your activity diagram. What is the first thing that is happening? A draft policy is getting created by the administration within the main campus. In the main campus, by the administration, a draft policy is created. That draft policy is sent to the satellite campus for the review by the administration only. एडमिनिस्ट्रेशन ने ही मेन कैंपस में ड्राफ्ट पॉलिसी क्रिएट की. उस ड्राफ्ट पॉलिसी को भेज दिया सैटेलाइट कैंपस में या जो दूसरे कैंपसेस होते हैं उसमें टू रिव्यू दैट. आफ्टर रिव्यूइंग इट इज अगेन केम बैक टू द मेन कैंपस. अभी एडमिनिस्ट्रेशन ही काम कर रहा है, अभी फैकल्टी पिक्चर में नहीं आया, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ही डील कर रहा है मेन कैंपस से भी और सैटेलाइट कैंपस से भी. तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई मेन कैंपस में. उस ड्राफ्ट पॉलिसी को ही सेंड टू द सैटेलाइट कैंपस फॉर रिव्यू. आफ्टर द रिव्यू इज रिसीव्ड, it again came back to main campus. Then the administration will finally finalize the policy. अब ये policy document क्या है? It's a finally जब policy finalize होगी तो एक policy document create हो जाएगा. अब ये policy document को center पे रखा हुआ. इसका मतलब this policy document will be accessible by administration also, main campus also, satellite campus, faculty also access कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे center में रखा हुआ है. थोड़ा थोड़ा पार्ट इधर भी है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा इधर भी, थोड़ा इधर भी. This is the representation. Then this policy document is sent to faculty in the main campus and faculty in the satellite campus, both at the same time. एक साथ भेजा गया है, मतलब यहाँ पे भी भेजा, यहाँ पे भी भेजा, इसलिए fork यूज किया गया. This fork is showing that this activity and this activity are happening simultaneously. मतलब faculty in the main campus will implement the policy and faculty in the satellite campus will also implement the policy. फिर आगे डायग्राम कंटिन्यू करना है करो, वरना क्लोज कर दो, काइंड ऑफ थिंग. सो ओवरऑल आर जिस्ट ये है इस चीज का that you use swim lanes architecture to represent how many holders or how many actors basically, just like in use case, are performing your task. Because अगर बिना actors के अब यही चीज हम बना देते, suppose there would have been no administration, no faculty, no main campus, no satellite campus. बस एक सिंपल सा एक्टिविटी डायग्राम है जो दिख रहा है. You are drafting a policy, reviewing a policy, finalizing a policy, फिर policy document बना, उस policy document को भेजा गया, faculty ने यहाँ implement किया, यहाँ implement, lot of things are happening. But you don't know कि draft policy कौन बना रहा है, ये review कौन कर रहा है, finalize कौन कर रहा है, भेज कौन रहा है, implement कौन कर रहा है. You are not clear in the initial activity diagram. So this thing is basically solved with the help of swim lanes architecture. We represent the stakeholders that you have administration, you have faculty. Okay? और एक से ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जो एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल टू क्रिएट अ ड्राफ्ट पॉलिसी यू नीड एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो एंड यू नीड द मेन कैंपस आल्सो. सो इस तरह 2x2 की एक मैट्रिक्स बना दी. जितना ज्यादा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, सपोज यू हैव 3 एक्टर्स ऑन द टॉप
and two actors on the bottom. Suppose यहाँ faculty के साथ साथ एक student भी होता, students in the main campus, students in the satellite campus. So एक 2x3 की matrix बन जाती, 2 rows 3 columns. So this is how you can create matrices to show the representation. And obviously we are talking about a 2D diagram, so 3D modeling में नहीं जाना है अभी. ये 3x3 आ रहा है, ये सब नहीं सोचना, सिर्फ मैट्रिक्स सकता है सिंपल m cross n का. So this was all about activity diagrams. Fine. Clear है? किसी को डाउट है किसी चीज में? So I have explained you all the tools that were needed. ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, but still you should know the use at least. ना डायग्राम ना बनाना हो, but you should be knowing its use. Is it clear to everyone? So we will do activity diagram tomorrow and we will do in the next. Chalo, thank you.